Class 7, we are starting with your second term syllabus in Maths NCERT, chapter number 8, and that is comparing quantities. एक तुलना करना. तो इंट्रोडक्शन में देखिए, इन आर डेली लाइफ देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़. कई बार ऐसा होता है कि हम दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कंपेयर करते हैं. Suppose we are comparing heights of Hina and Amir. We find that Hina is 2 times taller than Amir. हम देखते हैं हीना जो है आमिर से दुगनी लंबी है और आमिर हाइट इज़ हाफ ऑफ हीना हाइट. तो ये भी कह सकते हैं कि आमिर की जो हाइट है वो हीना की हाइट से आधी है. So consider another example where 20 marbles are divided between Rita and Amit such that Rita has 12 marbles and Amit has 8 marbles. तो आपके पास 20 मार्बल्स हैं, तो आपने रीटा और अमित को में डिवाइड करे. रीटा के पास 12 मार्बल्स आ गए, अमित के पास 8 मार्बल्स आ गए. तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों की इनका हम रेशियो निकालेंगे कि रीटा के पास 12 हैं, अमित के पास 8 हैं. तो रीटा हैज़ गॉट 3/2 टाइम्स द मार्बल्स दैट अमित हैज़. तो रीटा के पास 3/2 टाइम्स 3/2 गुना ज़्यादा मार्बल्स हैं अमित के मुकाबले. तो कैसे आया ये नंबर 12 raised to 8? 12 is that to 8 is equal to 3 is that to 2. So that means their ratio is, इसको रेशियो बोलते हैं जो बीच में हम दो बिंदियां लगा देते हैं, that is the ratio. The ratio of their marbles is 3 raised to 2. That means if Rita has 3 marbles, then Amit has only 2 marbles. So, or you can say that Amit has 2/3 part of what Rita has. So, instead of 12 to that of 8, you are writing 8 to the 8 of 12. Or you can see 4 to the 8, 4 3 the 12. You make it to the lowest terms, then you get 2 that to 3. So, Amit has 2/3 part of what Rita has. Yet another example is where we compare speeds of a cheetah and a man. Speed of cheetah is 6 times the speed of a man, or the speed of the man is 1/6 of the speed of the cheetah. तो ये आप समझ गए होंगे कि चीता जो है वो इंसानों से 6 गुना ज़्यादा तेज़ भागता है. उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर. अ मैन कैन रन 20 किलोमीटर पर आवर. सो 120/20 इज इक्वल टू हाउ मच? You cancel 2 into 2, 6 times more. Alright? The cheetah can run 6 times with the speed of a man. Now in class 6 we have learned to make comparisons by saying how many times one quantity is that of the other. So we see that it can also be inverted and written as what part of one quantity is of the other. तो या तो वो एक क्वांटिटी से दूसरी चीज़ कितने गुना ज़्यादा है, या हम ये उसको अगर इन्वर्स कर दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दें, तो हम कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का कितना हिस्सा है. तो ये जो है दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज. नाउ in the ratio of the heights, you can say if Amir's height is 150 centimeter, Hina's height is 150 centimeter and Amir's height is 75 centimeter, then the ratio will be 150 raised to 75 or 2 raised to 1. 75 to the 150. So you can also make other comparisons like for different situations. Now Hina's height is 150 and Amir's is 100 centimeter. Now the ratio is different, right? Because the data is different. So the ratio of their heights would be then 150 upon 100. That is Hina upon Amir will be 150 upon 100 or 3/2 or 3 that to 2. So this is the same as that of Rita to Amir's share of marbles. So you can see that the ratio for two different comparisons may be the same. Now remember, whenever you compare two quantities, their units should be the same. That means either both are in meters or in paise. Instead of rupees, one is, you can't say that one is in rupee, another is in paise. Both should be in paise. Or
say in liters. If it's both are, it should be in milliliters, not one is in liter and another is in milliliter. No, then the comparison wouldn't be correct. So now equivalent ratios. Now you can compare different ratios with each other. So you can know that whether they are equivalent or not. So for that you write the ratios in the form of fractions and then compare them by converting them to like fractions. So these like fractions are equal, then we can say that the given ratios are equivalent. तो पहले आप क्या करेंगे, रेशियो को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए और उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको पता है आप कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम कर लीजिए और उसके बाद न्यूमरेटर्स एलसीएम निकाल के आप कर सकते हैं डिनोमिनेटर्स को सेम, और उसके बाद जो न्यूमरेटर्स हैं उसको आप देखेंगे कौन सा कम या ज़्यादा है। जो कम वाला होगा उसकी वैल्यू कम होएगी, जो उसमें ज़्यादा है न्यूमरेटर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आर 1/2 और 2/3 1:2 and 2:3 they are equivalent or not. So what you will do, you will check it out. Half is equal to 2/3. Now you have to make the denominator same. So you can make them 6. So multiply 1/2 with 3 in n and d both, and in 2/3 multiply it with 2 in n and d both. So you get these quantities. In the first case you get 3/6 and in the second 4/6. So now you know that 4/6 is greater than 3/6. So they are not equal at least. That means 2/3 is greater than 1/2. So that's how you can compare the quantities. In the same way, suppose performance of a cricket team is given in the matches which it has played. In the last year it won 8 matches and lost 2 matches. This year they won 4 matches and lost 2 matches. So in which year was the record better? So you can say that out of 8 matches, you can just by looking you can say that out of 8 they have lost only 2 and they have won 8, and this year they have won 4 and lost 2. So that means last year's performance was better. Let's find it out mathematically. So how will we do that? So last year's wins raised to losses is 8 that to 2 is equal to 4 that to 1. 2 4 is 8. And this year 4 that to 2 is equal to 2 that to 1. So that means 4 that to 1 is greater than 2 that to 1. So that means 4/1 is greater than 2/1. So that means the performance was better last year. Now, keeping things in proportion and getting solutions. Proportion. 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 Now suppose there's this student अरुणा, उसने एक स्केच बनाया है जहाँ अपने घर का और पास में अपनी मम्मी का। अब इसमें आपको क्या चीज़ गलत लग रही है? मम्मी की हाइट जो है वो तो दूसरी मंजिल तक पहुंची जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो है प्रोपोर्शन देखना चाहिए था कि एक्चुअल में मदर की हाइट जो है वो कहाँ तक आ रही है। हो सकता है यहाँ पोर से नीचे ही तक आएगी उनकी हाइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको जो है कुछ आपको स्केल एक जो है वो देखनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, जैसे एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग, एक्चुअल हाइट ऑफ मदर शुड बी इन द सेम प्रोपोर्शन एज द हाइट ऑफ बिल्डिंग इन ड्राइंग अपॉन हाइट ऑफ मदर इन द ड्राइंग। सो तभी ये प्रोपोर्शन में होंगे। अब नेशनल फ्लैग्स जो बनते हैं उसमें क्या होता है, लेंथ वर्सेस ब्रेथ का क्या रेशियो रहता है। अगर लेंथ 1.5 मीटर है तो ब्रेथ 1 मीटर होगी, या 1.7 मीटर अगर लेंथ है तो 1 मीटर होगी ब्रेथ। तो ये रेशियो जो है 1.5/1 इज़ इक्वल टू 3/2, क्योंकि यहाँ 1.5 को अगर आप होल नंबर में कन्वर्ट करें तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, 1.5 को भी और 1 को भी। 3/3 इज दैट टू 2 हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शन आमतौर पे सारे कंट्रीज़ के फ्लैग्स और हमारे इंडियन पोस्ट कार्ड का भी ये रेशियो रहता है।
तो इनका रियल लाइफ में भी बहुत यूज़ है इन प्रोपोर्शंस का। जब भी हम कोई रूम बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, तो उसमें इनका बहुत ध्यान रखा जाता है। अब हम आते हैं यूनिटरी मेथड पे। आपने पढ़ रखा है, आपके पास टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट है अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ थिंग्स हैं, तो आप उसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक का आपको प्राइस पता चल जाएगा, और उसके बाद आपको कितने की प्राइस पता करनी है उससे आप उस एक के प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। या डिस्टेंस हो गया, या कुछ भी पूछा जा सकता है, कितना लीटर पेट्रोल से जो गाड़ी चल रही है, या लेंथ पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे आपको एक मैप दिया गया है, उसकी स्केल है 2 सेंटीमीटर इजकल टू 1000 किलोमीटर। तो अगर आपके मैप में डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है, तो वो कितना डिस्टेंस जो है वो दिखा रहा है। तो उसके लिए आप उसको दो तरह से कर सकते हैं इस आंसर को। पहला तो ये है, so we'll do this sum in two ways. First, let the distance be x kilometer, then 1000 is that to x, which is 2 is that to 2.5. So we'll make it in the form of fractions. 100 upon x is equal to 2 upon 2.5. अब आपको x की वैल्यू पता करनी है, जिसको न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए। तो आप इसको भी दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1000 इंटू 2.5 अपॉन 2 कर लीजिए, या फिर आप जैसे इसमें किया गया है, दोनों तरफ जो है आप ऊपर न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, LHS में और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। तो इधर x और x कैंसिल हो जाएगा, इधर 2.5 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा दैट विल बी 1000 इंटू 2.5 इज इक्वल टू x इंटू 2। तो x will be equal to 1000 into 2.5 upon 2. It will be equal to 1250, and that is in kilometer. So here either you write 1000 into 2.5 upon 2 is equal to x directly, or you can take this method, which is a lengthier one. Now you can do it with the unitary method also. So जो पूछा गया है उसको राइट हैंड साइड में लिखिए। आपसे किलोमीटर्स पूछे हैं, किलोमीटर्स को राइट हैंड साइड में लिखिए। तो 2 सेंटीमीटर मीन्स 1000 किलोमीटर, स्टेटमेंट बना लीजिए। तो 1 सेंटीमीटर मीन्स 1000 अपॉन 2 किलोमीटर। सो 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 1000 upon 2 into 2.5. Solve it, you will get again 1250 kilometer. So now you also make 2 points and 1 point at the bottom like this. Sorry. Because. This is because. So means so is this. Therefore. Or hence. Therefore. That's how you donate. So you can put these symbols also. So you can solve any question by two methods. 6 bowls cost 90. What will be the cost of 10 such bowls? 6. Now what they have asked you? Cost in rupees. तो उसको आप राइट हैंड साइड में लिखिए। Cost of 6 bowls is 90. 1 will be 90 upon 6. So 10 will be 90 by 6 into 100 is equal to 150 rupees. Car can go 150 km with 25 liters of petrol. How far can it go with 30 liters of petrol? So how far means they ask the distance. That means in kilometer you have to find out. So you will write kilometers on the right hand side. So in 25 liters the car travels 150 kilometer. So in 1 liter 150 upon 25. So in 30 liters into 30, 180 kilometers. So that means we have find out in unitary method. So what is unitary method? Unit means 1.
The compare the total cost in number of items with the and divide it with the number of items. Comparison means divide the total cost to the number of items. You get cost per item. Per means one item or any other quantity which is given to you. Remember. So that is unitary method. Per means for each. Can be anything. Now we come to this thing discuss and write. An ant can carry 50 times its weight. If a person can do the same, how much would you be able to carry? We will be also carry 50 times our weight. Suppose our weight is x, then we will be able to carry 50x weight in kgs. If our weight is in kgs, then that means 50x kg and so on. Find the ratio of rupees 5 to 50 paise. So first convert rupees into paise. So 1 rupee has 100 paise. So 5 rupees will have 500 paise. And 500 upon 50 will be 10 raised to 1. 15 kg to 201 gram. So remember 1 kg is equal to 1000 gram. Multiply 15 with 1000, you will get 15,000, and divided by 210, you get 500 to that of 7. So that will be the ratio of 15 kg to 210 gram. Similarly, 9 meter to 27 centimeter. 1 meter has got 100 centimeter. So 9 meter will be 900 centimeter. And compare them. 900 upon 27 is equal to, divide both of them with 9, you will get 100 to that of 3. Now 30 days to 36 hours. In 1 hour there are 24 hours. So in 30 days there will be 30 into 24 hours. And then they will be converted into hours. Then divide them with 36. Solve it. You will get 20 to that of 1. In a computer lab, there are 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students? So, number of computers is asked. So, write them in the right hand side. So, 6 students need 3 computers. So, one student will need 3 upon 6 computers. So, 24 students will need 3 by 6 into 24. And then you get 12 computers. Population of Rajasthan is equal to 570 lakhs and population of UP is 1660 lakhs. Area of Rajasthan is 3 lakh kilometers square and area of UP is 2 lakh kilometers square. So now they are asking that how many people are there per kilometer square in both these states. So Rajasthan में 570 lakhs per 3 lakh kilometer square. Divide both of them. You will get the answer. That is 190 persons per lakh per lakh kilometer square. Similarly, in UP, there are 1660 people per 2 lakh kilometer square. How many are in per lakh kilometer square? 830. Alright. So so you can see that UP is more populated because it has got 830 people per lakh square kilometer, whereas not lakh square kilometer, per square kilometer, because lakh and lakh will get cancelled. Alright, and in Rajasthan there are only 190 people per square kilometer. So this is the exercise. Now we'll come to percentage.